Okay, so let me know in the chat box that how many of you have used this Canva tool before. I expect that a lot of you have already used this Canva tool before, right? Let me know in the chat box that you have used this tool. Koshagra is writing Perplexity. No, I saw for PPT. Yes, for PPT, Koshagra have used. Hetvik has also used. Manya have used. And Nityam have used. So I really knew that you have already used this tool at a lot of times. My whole family uses it. Absolutely, right? Advik is writing no issues. You will be learning it today, right? Right. So yeah, perfect. So actually, it is basically kind of a life skill, right? It is going to be used in each and every aspect of your life. Such a useful tool it is. Me personally, I am using this tool from the last 7 to 8 years. 7 से 8 साल हो गए मुझे यूज करते करते ये, और मैं आज भी यूज करता हूँ, राइट? आज भी यूज करता हूँ. राइट नाउ इसका यूज थोड़ा सा कम हो गया बिकॉज ऑफ द एआई, बट यस इट हैज बीन 7 to 8 years टू मी पर्सनली यूजिंग दिस टूल. Right, same with me, Kushagra. So 7 to 8 years you have been using? No, not like that. Don't bluff, Kushagra. Okay, so 4 to 5 years. Okay, really nice, really nice. So what I truly mean ना, जिन्होंने यूज नहीं किया है, for those who have not used this tool, घबराने की जरूरत नहीं है. We will be having a discussion, we will be having a look in today's session how that you can use this Canva, right? But before that, let me just tell you that how this is very much important for all of you who are present in this today's meeting in each and every aspect of your life. That is, when you are a student, right now you are a student, some people will be there who are in class 4th, right? To them it is highly useful. Then you will go to class 7th or 8th. At that point of time it will be again very much useful for you. If you go to the class 11th, 12th, again very much useful for you. If you to go to the college as well, there also you will be using the same tool again and again, right? If you go to the job, you will be using this tool. If you go to the business, you will be very much involved into this tool, very much involved into this thing for the marketing stuff and everything. If you do your own startup, you will be using this tool. So if you want to plan that you need to create your birthday invitation card, you will be using this tool. If you want to plan to create a wedding invitation card, you will be using this tool. So everywhere you are, you will be occupied with this tool, everywhere. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपकी लाइफ में कैनवा की जरूरत ना पड़े. दैट इज माय फॉर श्योर गारंटी टू ऑल ऑफ यू, राइट? येट इट इज अ वेरी बेसिक टूल बट अ वेरी वेरी यूजफुल टूल. ऐसा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता. इम्पॉसिबल इट इज. अगेन मैंने कहा इम्पॉसिबल इट इज कि आपको आपकी लाइफ में कैनवा जैसे टूल की कभी जरूरत ही ना पड़े. हो सकता है आज ना हो, 1 साल बाद जरूरत पड़े, बट पड़ेगी पड़ेगी, आपको यूज करना ही करना होगा. Actually, my family uses it. Absolutely. Right. And if you now know how to use it, you will also start using it. Right. Perfect. So, what this tool is all about, as you guys are very much aware of this tool, that this tool is basically for some kind of creation. You can create some images, PPTs, and a lot more. Like you can create PPTs, social media posts like Instagram posts, LinkedIn posts, Twitter tweets. You can basically do little bit of video editing kind of thing. For video editing, I do not recommend this tool a lot of much times. Why? Because video editing is basically very minimalistic or very basic kind of video editing can be done with this tool. But yes, again, an advantage of this tool is you can always edit videos. Basically, you can use or you can create some printable material, some documents, whiteboard. It's basically a canvas, blank canvas, and sheets or anything else, right? Okay. My mommy created a reel by it. Absolutely fantastic. It's common for people, yes. और आपकी लाइफ में भी आपके हर एक एस्पेक्ट में you will be using this tool again and again. So now basically what the thing is, the people who are much more associated with social media kind of stuff, right? या फिर आपको Instagram post, LinkedIn post, Twitter tweets, right? PPTs.
ये सब चीजें बनानी है ना, तो this is going to be the absolute value for you, right? You can easily create that with the help of that. So I will be just making you showcase how you can create an Instagram post just by simply doing the stuff. So once you log in into this tool, you will click on this template section. So now you can just search Instagram post. So now the beauty of this tool is I want to create an Instagram post. If Canva was not there in the market, then the tool which is used is Adobe Photoshop, right? So Adobe Photoshop, the people uses it to create Instagram post or images or something, some material of that, right? So Adobe Photoshop is being used for that purpose. In Adobe Photoshop, what we have to do is right now you can just see a blank canvas over here. So in Adobe Photoshop, it is just a blank canvas, and there you need to put each and everything from the very scratch. You need to put an image, you need to put a heading, you need to put each and everything. If you have used, like Kushagra has used, so he will be relating with my conversation that from the very scratch you need to create an entire stuff. But the beauty of this tool is you are having a bunch of these templates, right? You are having a bunch of these templates. There are millions of templates which are available in this tool that you can make use of. So right now, I just searched uh, Instagram post is a very common thing, right? So in Instagram post, let's say I want to create something weight loss Instagram post. So any topic that you can also give, any relatable, whatever your requirement is, whatever you want to do, you can just give it accordingly. So I am having these kind of posts. Now my question to you is, to all of you, my question is, right now, I searched for weight loss Instagram post. That means I need to create a post on for Instagram that is basically focused on weight loss. Now, once I hit on and this enter button, now I am having a bunch of templates. Like millions of templates are available for me, right? Now, as a user, how I can decide that which template I should go for? Can you guys tell me that thing? You guys are using Canva from past several years. So can you guys tell me that how I can just decide that which template should I take or which template should I pick directly? Because it is slightly impossible that I can try all the millions templates. It is impossible for me. I cannot try each and every template and edit that. How I can decide that which template should I choose? In the chat box, guys? Any idea? My question is clear to you that out of these millions templates, I want to create a post for weight loss Instagram post. What are the factors? Like how I can decide that which template should I use and edit? I don't know. Okay, no issues. How about others? Kushagra, you have used it. Tell me. Know the purpose? Absolutely. Very good, Dia. We have to go somewhere. Where? Where we have to go, Kushagra? Nityam is writing, I don't know. No issues. I will let you know. I forget. Okay, no issues, no issues. In fact, Dia has told us the right thing. Know the purpose, right? But before knowing the purpose, now we are having a very much purpose clear in front of us. That is, we our purpose is we need to create an Instagram post that should be related to weight loss. That is our purpose. Now the thing is, you need to realize that for whom you are creating the post. You are creating the post for yourself, or the post is going to be visible to others as well. Because right now I'm creating it for an Instagram post, so there are users who will be commenting on my post, liking my post, engaging with my post, right? So they will be doing that activity. Or let's say if you are creating a presentation on it, so the presentation you are creating for yourself, or you need to deliver the presentation in front of an audience that is going to watch that thing.
right? So basically the audience is there, other people are there who will be watching your content and interacting with it, right? Ultimately. No issues, no issues. So what I just told you, the other people, your target audience, other audience, it can be any audience, online or offline. So they will be watching your content. Now the thing is, if I particularly talk about Instagram right now, because I have searched for Instagram post, right now the people are having very less attention span, right? The people are not having that much attention span, so the attention of the people is very hard to get online, right? And in order to grab the attention of the people, your post, your PPT, your any kind of creative. Whenever I called creative in this session, na, to create by creative, what I refer is basically the Instagram post. It can be a LinkedIn post, it can be any image, it can be PPT, it can be anything. By creative, what I mean to say, right? So your creative is going to directly talk to the audience. So you have to make sure that you need to stop them. It should please them actually, right? ऐसा नहीं सिर्फ आपको अच्छा लगना चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए. It should please them. It should attract them. Or the correct word is, it should be eye catchy. It should be eye catchy. That means whenever the people are scrolling on Instagram, and if your post is going to appear over there, then the people should at least stop at your post. Otherwise, again, I said, na, attention span of the people are very much less nowadays. So at least the people should stop at your post. And to stop at your post, what I mean is your post should be eye catchy. It should be attention grabbing. It should be attractive, right? That should be done. So now, by the same thing, I can also do, what I can do is I can just maybe little bit scroll and figure out which post is performing well. Let's say I am not liking all these four posts. Let's say this post is looking somewhat good in all these, right? This is, my attention is grabbing over there, right? Or मेरी आंखें कहाँ पर जा रही हैं, मेरी आंखें सबसे पहले किस चीज को कैच कर पा रही हैं, right? So that is attention grabbing for me, right? The first thing, it was the first thing. Now the second thing, कि आपको क्या और माइंड में रखना है while you need to choose any kind of template. ये अगेन मैं प्रैक्टिकल यूज के सिनेरियोज बता रहा हूँ. एंड वंस यू प्रैक्टिस अ लॉट ना, जब आप डेली यूज कर रहे होगे कैनवा जैसे टूल को, आपके लिए चीजें बहुत इजी हो चुकी होंगी, बहुत आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा आपको यूज करना है. The second thing is, while you need to like choose a template, you need to make sure कि, for example, let's say football match Instagram post. Now the purpose of my post is basically that I need to create an Instagram post which I need to properly display that we are conducting a football match for two teams, and the date of the match is 22nd of uh, July. The time is 7 p.m. and the venue is, let's say, Alpha Stadium, Delhi. So this is basically the kind of stuff that you want to showcase in your creative, that you already know, your needs and requirements that you already know. So what you can just figure out, you can choose those creatives that are very easy to edit. Now, by easy to edit, what I mean to say that, for example, I want to put this time, date, and venue. So I will only look for those creatives that are already having this information, or that can be very easily edited, so that it will save us my time. It will save me my time, right? Because the purpose of using these templates is the same, na? We want to save our time, right? So that I can do. For example, in this creative, this particular creative, the timings or venue is not visible at all. So I will be leaving this creative. Whereas if I talk about this now, you will see that properly venue is there, date is there, time I can easily add. So I can maybe take this one. I can also take this one where time, date, and venue is available.
right? So I will choose those kind of stuff. Let's say this is according to my requirement. I can just click on this and hit on this customize. So now, according to me, this is my perfect fit. But if you don't find that, you can just pick another one also. But these are the two things that you need to keep in your mind while choosing a creative that you need to edit, right? Perfect. Till now, any questions? Any questions? How you need to select a creative from the millions of templates which are present over here? No, sir. No, no, no. Perfect. 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 Let's come back to this. Now it's all about how you edit this. No questions. Okay. So how you edit this? Let's say I want to edit this text. What's the best match at Borsele Stadium? So I want to edit this text. Join us for an exciting football match, right? Join us for an exciting football match. Whatever I think, whatever as per my requirement I want to do, I can do that. For example, here a logo has been inserted, and I don't want this logo. I can just simply remove that. But instead of this, what I want is I want a logo of my own company. Let's say if you are having a logo image, right? Let's say I'm having this on your PC or something. You can use that. You can just upload that logo over here. You can just upload that logo over here. Right now, I'm just doing the copy paste work. I just copied that logo and I pasted it over here. So that it will be done in a while, right? So now it has been done. Perfect. So now my logo has been placed. But the thing is, once you are creating these kind of creatives, so let me just tell you, all we are doing is basically a job of a graphic designer, right? Companies hire especially the people called graphic designer who creates these kind of images, marketing creatives, ads, and a lot more, right? So I'm not saying that you just become a graphic designer, but you should have a basic knowledge about how these things work. As we already discussed, that this tool is going to be used in your life entirely. So now the thing is, once you are creating this, you should also have some design sense. What I call as design sense. एंड डिजाइन सेंस व्हाट आई मीन कि आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हमने लोगो चेंज तो कर दिया. द प्रॉब्लम विद दिस लोगो इज, आप देखो कि लोगो क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है. लोगो इज नॉट क्लियरली विजिबल. हमने लोगो डिलीट करके दूसरा लोगो तो लगा दिया, बट नाउ दिस लोगो इज नॉट क्लियरली विजिबल, राइट? सो नाउ मेरे को क्लियरली विजिबल करना है, तो या तो मैं उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करूंगा, राइट? दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन डू. बट क्योंकि मेरी ये बैकग्राउंड में पूरी फोटो है, तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू दिस एलिमेंट्स एंड आई कैन जस्ट राइट सर्च फॉर शेप्स, और मैं एक बैकग्राउंड बना दूंगा इस लोगो के लिए. आई विल क्रिएट अ सेपरेट बैकग्राउंड फॉर दिस लोगो, और मैं इसका कलर कर दूंगा व्हाइट, सो दैट मेरा लोगो क्लियरली विजिबल हो पाए, राइट? मेरा लोगो क्लियरली विजिबल हो पाए. ठीक है. चीज देखोगे आप कि मैं इसकी राउंडनेस को भी एडजस्ट कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग. बॉक्स आई हैव क्रिएटेड,
I can also adjust the roundness of this box also, right? तो अगर मेरे को थोड़ा सा इसको राउंडनेस करना है इसके कॉर्नर्स को, तो आई कैन जस्ट इंक्रीज दैट लिटिल बिट। इन दिस पर्टिकुलर मैनर व्हाट आई मेक श्योर इज कि भाई मेरा ये ऑड भी नहीं लग रहा, और मेरे क्या क्या हो गया, मेरा लोगो इज क्लियरली विजिबल, माय लोगो इज क्लियरली विजिबल, राइट? एब्सोल्युटली। नित्यम इज आस्किंग सर हम इसमें अपनी फोटो डाल सकते हैं? आप अपनी फोटो बिल्कुल डाल सकते हो, राइट? यू कैन ऑलवेज अपलोड योर फोटो, राइट? मेरे पे कोई फोटो, हमने ये फोटो उस दिन जो बनाई थी आप सबको याद हो, तो यही डाल देते हैं इसमें, राइट? नहीं ये नहीं डालते हैं, मेरा अकाउंट क्योंकि वो है ना, मेरी टीम भी यूज करती है, तो वो देखेंगे तो हंसेंगे मेरे ऊपर, तो मैं ये वाली फोटो ले लेता हूँ अपनी। ठीक है, मैं ये वाली फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, आई कैन जस्ट कॉपी दिस, और मैं यहाँ से भी जाके अपलोड कर सकता हूँ, और आई कैन ऑल्सो पेस्ट दिस, राइट? मैं कोई एक्सटर्नल फोटो भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर फोटो आई कैन ऑल्सो डायरेक्टली रिमूव द बैकग्राउंड विद अ सिंपल क्लिक। ये जो बैकग्राउंड रिमूवल वाला फीचर है ना, ये सिर्फ प्रीमियम प्लान्स में मिलता है, क्योंकि मेरे पे पेड प्लान है। अदरवाइज फ्री प्लान्स में आपको ये नहीं मिलेगा, राइट? तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा, वेयर एवर आई वांटेड टू यूज दिस, तो मैं उसको यूज कर पाऊँ, राइट? अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने अपलोड करी थी। ये चीज कर ली हमने। अब क्या है ना, इसमें बहुत कुछ बेसिक भी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो आप। यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज, यू कैन चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट, मेक इट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, utilize it. Alignment should be right, left, or middle, and it should be a ordered list or not. It should be letter spacing on line spacing. Transparency is this one, कि अगर मैं इसको इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू मेक इट लेट्स ट्रांसपेरेंट, सॉरी दिस वन, सो आई कैन डिक्रीज दिस। तो डिक्रीज करूंगा, देखोगे आप हल्का सा कम हो गया है, और मैं इसको अगर इंक्रीज करूंगा थोड़ा सा, देखो ट्रांसपेरेंसी, नाउ यू कैन जस्ट सी एंड फील व्हाट दिस ट्रांसपेरेंसी इज ऑल अबाउट, राइट? तो मैंने आपको जल्दी जल्दी क्यों बता दिए ये सारे ऑप्शन, क्योंकि यू आर वेरी मच वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज ऑप्शन, यू ऑलवेज यूज दिस इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एवरीथिंग, राइट? तो इसको बता के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका और अपना, कि भाई फॉन्ट स्टाइल क्या होती है, राइट? और आपका टेक्स्ट क्या होता है, ये सब क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो खुद से, राइट? इनफैक्ट जो लोगों के लिए नया है, वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करें कि फॉन्ट स्टाइल चेंज करके देखें। इट इज अगेन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबने यूज किया है, आप सब लोगों को आप पता है कि कैसे चीजें क्या होती है, राइट? तो इफेक्ट्स में आप डाल के देख सकते हो, अगेन रिलेटेड टू फॉन्ट एंड एवरीथिंग। परफेक्ट। नाउ यहां पर आप, लेट्स से, लेट्स से दिस इज द फोटो विच आई वांटेड टू रिप्लेस। तो यहाँ पर आपको सीधा कहीं और से फोटो डाउनलोड करने की नीड भी नहीं है एक्चुअली। What you need to do is just go to the elements. You can just write wall layers or whatever the thing is related to. और आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर फोटोज टैब में बहुत सारी फोटोज आपको ऑलरेडी मिलेगी। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इस फोटो को रिप्लेस भी कर सकता हूँ इस फोटो से, राइट? या वॉट एवर आई वॉन्ट ना, आई कैन जस्ट रिप्लेस दैट फोटो। अब लेकिन अगर ये फोटो मुझे फ्रॉम दी वेरी स्क्रैच बनानी हो, तो कैसे बनेगी? देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रेम्स। अगर वैसी फोटो लगानी हो मेरे को, तो कैसे लगाऊंगा मैं? फ्रेम्स में जाएंगे हम, और आप देखो मल्टीपल तरीके के फ्रेम्स हैं। अगर सर्कुलर बनानी है, इस तरीके से डालनी है, ये डिजाइन डालनी है मेरे को फॉर एग्जांपल, राइट? और इसको क्या था, पीछे करनी है मेरे को, आई कैन जस्ट गो टू द लेयर्स एंड मेक इट शिफ्टेड बैकवर्ड। एंड मेरे को इसमें अगर फोटो अपलोड करनी है, राइट, तो यही शेप ले लेगी मेरी फोटो बाय डिफॉल्ट, राइट? समथिंग लाइक दैट। Again, I am just doing it for the dummy purposes, demo purposes, so that you will have a
ग्रेट आइडिया कि भाई क्या क्या चीजें इज पॉसिबल इन टू दिस, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप कर सकते हो इसमें। एंड अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन दिस कैनवा। So you can just directly interact with this, make changes. You can maybe create your birthday invitation cards, wedding invitation cards. Just you need to write the simple thing, birthday birthday invitation, right? So it has already the templates of all that stuff. Similarly, you can write wedding invitations or anything what you want, na? Whatever your requirement is, you can just do that stuff. Perfect. Now, any questions till now? It is clear to you guys? Messy, everything. I make this. No, no, perfect, perfect, perfect. Now, Canva has launched something called as Canva AI, right? You will see like this. So in Canva AI, what this is all about, here you can just write your prompt or the text, what kind of image you want to create, and it will create it in the same manner, right? Just like we create images in Chat GPT, na? Kind of that it is there. So I already have a prompt. Right now, I am having an already saved prompt, so I'm using that. I will just make you show that what this prompt is. So this prompt is that you are a graphic designer, 20 years experience है इसको, और हम एक फुटबॉल मैच कर रहे हैं जिसकी डेट है 22nd, द टाइम इज 7 PM, स्टेडियम इज एल्फा स्टेडियम न्यू दिल्ली, और आपको बढ़िया सी एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, और ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए उसमें, राइट। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया और कैनवा को दे दिया, राइट। मैंने एक प्रॉम्प्ट, ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैंने कैनवा को दे दिया। अब क्या है, मैं यही सेम प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को भी दे के देख लेता हूँ। I can just use that same prompt to chat GPT as well. Right? तो मैंने वो prompt अपने Canva को दिया है, and the prompt I have given to the chat GPT. Very easy it is. Yes, absolutely. Now the Canva has generated 4 images that are in front of you very well. First, second, third one, and fourth one. Right? ये images इसने generate करी है. Let us just wait for chat GPT as well. It has also generated a photo. Now just see the difference in the quality. चैट जीपीटी ने जो फोटो जनरेट करी है वो कितनी स्टनिंग है, हाउ स्टनिंग द फोटो इज। प्रॉपरली नेम रिटन है, टीम्स दिख रही हैं, और डेट इज क्लियर, टाइम इज क्लियर, वेन्यू इज वेरी मच क्लियर। बट कैनवा, कैनवा से तो हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होनी चाहिए कि कैनवा ने ऐसा क्यों बनाया है। बिकॉज दिस कैनवा टूल इज देयर इन द मार्केट फ्रॉम द पास्ट 25 to 30 years और मे बी मोर देन दैट, राइट। तब से कैनवा काम कर रहा है इसके ऊपर, स्पेसिफिकली इन चीजों के ऊपर। और ये तो बच्चा है अभी, चैट जीपीटी, ये तो अभी 3 साढ़े 3 साल हुए हैं आए हुए, राइट। एंड देन itself this is creating such a great quality of photos that you can always see, right। तो what I mean to say is यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है ये चीजें, this the things, the quality of images that is possible today is not possible maybe 8 months ago, right? Why? Because
when you create images with chat gpt ना, it always gives you spelling mistakes, right? हमेशा spelling mistakes आपको ये करके देता था, and once you correct those spelling mistakes, eventually कुछ और गलत हो जाता था, right? But now the problem has been completely solved, or right now it creates this kind of stunning creatives. Same is with this Gemini also. If you create an image on Gemini, so you can do that as well, right? Definitely, definitely. So it is now creating the image. So what I truly want to make you understand ना कि कैनवा कर रहा है बहुत अच्छा है फॉर द टेम्पलेट्स इफ यू वांट टू क्रिएट इट मैनुअली, बट चैट जीपीटी एंड दीस काइंड ऑफ टूल्स आर वेरी वेरी मच गुड. सी द काइंड ऑफ इमेज इट जेमिनाई हैज क्रिएटेड. इसने तो पूरा मतलब इतनी अच्छी इमेज की एक ग्राफिक डिजाइनर ने बना दी हो, वैसी इमेज बना दी है मान ली, तो भाई वाओ, इट इज जस्ट लाइक अ वाओ, राइट? बट फिर भी ये जो प्लेयर है मार्केट में, ये compete नहीं कर पा रहा, क्यों? कैनवा, आई डोंट नो, राइट? बट अगेन फॉर द टेम्पलेट पर्पज इट इज वेरी मच गुड enough. You can use that for the template purpose, right? That is always there, right? So you just go and practice on this tool. Canva is poor in image quality for the Canva AI part, right? For Canva templates, these templates are very much good. They are pretty much good enough, all the templates. If I just write a LinkedIn post, they are pretty much good enough, all the templates, right? But for the AI they had to work on something so that they can just do that well. So templates are good enough as per the requirement. Now, what is your homework for today? Your homework for today. That is, see, once you create any kind of template, you edit any kind of template, there are lots of colors that are involved into that. उसके अंदर colors होते हैं, right? It can be green, blue, black, or anything, right? For example, this one, let's take this one. So what generally happens ना, the advice जो design sense की I was talking about the design sense. So what the design sense, what I was saying is कि भाई आपको design sense होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पर अच्छी लगेगी, alignment कैसा होना चाहिए, सब कुछ. साथ में उसमें कलर्स के लिए भी बताया है कि एक क्रिएटिव में ना, क्रिएटिव यू शुड ओनली यूज टू कलर्स ओनली. दो कलर्स यूज करना चाहिए आपको. ऐसा नहीं है कि आप पांच कलर उसमें कुछ भी डाले दे रहे हो, उसको भद्दा बनाए दे रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा वो, राइट? अल्टीमेटली बिकॉज इट हैज टू अट्रैक्ट द पीपल आउट देयर ना. सो एक क्रिएटिव में दो कलर्स हमको यूज करने हैं, उससे ज्यादा नहीं. या फिर मैक्सिमम हो जाए कि आप किसी एक केस में तो थ्री कलर्स. अगर उससे ज्यादा जाओगे तो अल्टीमेटली आपका क्रिएटिव की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगेगी, आपको एलिगेंस नहीं आएगी, राइट? कि अब हम जब कलर पे बात कर ही रहे हैं, so yeah, I have seen a bad and good both slide. Perfect. क्योंकि अब हम जब कलर की बात कर ही रहे हैं, so it is your today's homework ultimately that what you need to do is हर एक कलर, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड and purple, pink, ऑल दी कलर्स विच आर देयर इन आउट मार्केट, जो कि प्राइमरी कलर्स हैं. अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रीन की बात कर रहे हैं तो ऑलिव ग्रीन और लाइट ग्रीन और जो पता नहीं कितने ग्रीन आते हैं, ग्रीन इज ग्रीन, राइट? सो आपको उनकी ह्यूमन साइकोलॉजी समझ के आनी है. what you need to do is, because each ये सब क्या है ना, मार्केटिंग का पार्ट है, दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग. सो ईच कलर
कन्वे समथिंग इन ह्यूमन साइकोलॉजिकल माइंड। हम कलर को जब देख रहे होते हैं ना, तो हर एक कलर कुछ ना कुछ हमारे माइंड में इनडायरेक्टली बात कर रहा होता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट ब्लू कलर ना, हम जब भी ब्लू कलर को देखते हैं तो हमारा माइंड सोचता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी है ये। राइट, जब हम ब्लैक कलर को देखते हैं ना, तो ब्लैक कलर थोड़ा सा एलिगेंस और थोड़ा सा प्रीमियमनेस फील कराता है। जब हम पर्पल कलर को देखते हैं तो भी हमें प्रीमियमनेस फील होती है। आपने देखा होगा जोमेटो का हमेशा लोगो रेड क्यों है, ब्लू क्यों नहीं है? क्योंकि रेड कलर एपिटाइट, आपकी भूख को जगाता है, ब्लू कलर आपकी एपिटाइट को मारता है। राइट, तो हर एक कलर सबकॉन्शियसली आपके माइंड में कुछ मीनिंग पोर्ट्रे कर रहे हैं। दे आर टेलिंग समथिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सो दैट यू हैव टू स्टडी कि भाई कौन सा कलर क्या बता रहा होता है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कलर साइकोलॉजी इन मार्केटिंग। सो कलर साइकोलॉजी आपको समझ के आनी है कि क्या है क्या नहीं। ग्रीन इज ग्रीन, इट कैन बी डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ऑलिव ग्रीन और वट एवर इट इज। राइट, एनी डाउट स्टिल नाउ? ग्रीन इज ग्रीन। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कलर साइकोलॉजी। ठीक है, एकदम डिटेल में ना भी समझोगे तो भी चल जाएगा। एटलीस्ट थ्री कलर्स कवर, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल एंड ब्लू। ब्लू हो ही गया, तो ये सारे कलर समझो आप। ठीक है, जिसमें आपको मैंने काफी तो बता ही दिए हैं, दैट ब्लैक इज फॉर एलिगेंस एंड प्रीमियमनेस, पर्पल इज फॉर प्रीमियमनेस, and pink is for basically kind of, if we are targeting, our target audience is basically the ladies and females, pink is for that purpose. Blue always portrays ki trust and authenticity, right? uh, Red is basically for used by those companies that is like Zomato and everything, right? So just figure it out ना, कि थोड़ा सा आप अपनी रिसर्च करो, आप अपना टाइम लगाओ, एंड जस्ट देन कम टू अ कंक्लूजन कि व्हाट इज दिस कलर साइकोलॉजी ऑल अबाउट। Men in Black is a movie, absolutely it is. So this is basically going to be your today's homework. And now, if you have any doubts, you can share. Today, we will keep the session short and crispy. Right? So, what I can do is, I can just a second, give me a second. I am little bit.